This is All India Radio. Welcome to the business news program Money Matters. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi Manoj Pathak. नमस्कार। इस बुलेटिन में हम शेयर बाजार, कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से। Prime Minister Narendra Modi says centre and states should work together, stresses on making cooperative federalism more meaningful. Benchmark indices logged losses of more than 1% in the business week ended yesterday. Sensex closes below 51,000 mark. Nifty ends below 15,000 level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि जिलों के बीच भी कायम किया जाना चाहिए। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीति आयोग की शासी परिषद की 6ठी बैठक को संबोधित कर रहे थे। अपने प्रारंभिक संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भारत तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है और कोई समय नहीं गंवाना चाहता। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में उठाए गए रचनात्मक कदमों का स्वागत हुआ है, जिससे राष्ट्र के मूड का पता चलता है। उन्होंने कहा इसमें युवाओं ने प्रमुख भूमिका अदा की है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसका उद्देश्य न केवल स्वयं की बल्कि विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का निजी क्षेत्र भी बड़े उत्साह के साथ आगे आ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन सराहनीय है। इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि 2014 से ग्रामीण और शहरी भारत में 2 करोड़ 40 लाख से अधिक मकान बनाए गए। उन्होंने कहा कि एक नई पहल के अंतर्गत 6 राज्यों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से मकान बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद 3.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाइप के माध्यम से जलापूर्ति की गई है। उन्होंने कहा कि गांवों को इंटरनेट से जोड़ने में भारत नेट कार्यक्रम ने परिवर्तनकारी भूमिका अदा की है। The Prime Minister said the central government has introduced production-linked incentive PLI schemes for various sectors. He said this is an excellent opportunity to increase manufacturing in the country and states should also take full advantage of the scheme and attract more and more investment. He said policy framework and cooperation between centre and state is also very important. Mr. Modi said a holistic approach has been adopted over the years from agriculture to animal husbandry to fisheries. He said as a result the country's agricultural exports have increased significantly even during Corona. Prime Minister said ease of living and ease of doing business will go hand in hand. Laws and regulations have to be amended for brighter future of the nation. The Prime Minister stressed on the need to promote innovation and use technology as much as possible. Joining us to debate on the topics that we are discussing today is Sharad Kohli, market expert. Sharad, we welcome you. Thank you. Thank you so much. The Prime Minister, Sharad, has said that the centre and states need to work closely in collaboration to economic growth of the country. What all needs to be done? This is one aspect, and today the Finance Minister has stressed upon the public-private partnership. And in fact, she has exhorted India Inc. to unleash an animal spirit and to bring in fresh investment to make India one of the fastest growing economies in the world. How do you see these two comments made by the Prime Minister and Finance Minister working towards the growth of the country? Sharad? लगता है हमारा संपर्क टूट गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि बर्बादी रोकने के लिए कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके काफी लाभ मिले हैं। उन्होंने मुनाफा बढ़ाने के लिए अपरिष्कृत खाद्य उत्पादों की बजाय संसाधित खाद्य वस्तुओं के निर्यात की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि किसानों के लिए सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें आर्थिक संसाधन, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा सकें। We have made contact with Sharad again. Sharad, did you hear my question or do I need to repeat it?
Yeah, I just heard probably the first half of the question, but I can make out what you were asking. I also added that the finance minister has also exhorted India Inc. to unleash animal spirit and to bring fresh investment to make India one of the fastest growing economies in the world. The two statements by the Prime Minister and the Finance Minister, how do they encourage growth in the country? Well, absolutely. I think cooperative federalism is the key to a country's economic growth, and we saw the best example of cooperative federalism came on the ground when we saw GST being launched in 2017. That was I felt, one of the greatest initiatives for cooperative federalism. Yes, I think the states and center have both play a role if the center thinks that probably it can grow on its own or it takes out policies which ultimately do not convert to action at the states level, I think it would be a wasted effort. So I think the Prime Minister's call is in that direction, that it wants states to participate, whether from the ruling front or not from the ruling front. Growth should be on top of the agenda of all the states without any preconditions. So I think that is what Prime Minister meant. And I think as far as the Finance Minister's statement is concerned, for inviting the corporates to unleash the animal spirit in investment, yes, because what we saw during Corona was that the private investments died out, and this was because of the demand and the consumption going down. The private investors, whether it is by way of factories, augmentation of capex, and so, we saw that they were not investing in the fear that who is going to buy if we invest today. Probably it is going to be a waste. I think with the government having taken an initiative in the budget with regard to infrastructure, I think the first made by the government should serve as an inspiration for the corporates. Now that the government has gone overboard, the total size of the budget is 34,50,000. Out of that, 5.5 lakh plus is the size of the capex. I think that should inspire many corporates that the government is committed to growth, and you should also not be left behind in investing. So I think corporate investments will generate employment, it will generate revenues for the government, and it will put a country in the direction of the $5 trillion economy that we have been dreaming of. Okay, moving on, the key indices closed with modest losses in the week ended yesterday as investors booked profits after recent rally. Weak global cues during the week checked the winning rally in the domestic stocks. Experts said that the rising global and local bond yields impacted the investor sentiment. The Sensex closed below the 51,000 level, while the Nifty ended below the 15,000 mark, retreating from record highs. On the other hand, the broader markets, the BSE mid-cap and small-cap indices ended in the green this week. During the week, the Sensex declined 655 points or 1.27% to settle at 50,890. The Nifty 50 index fell 182 points or 1.20% to settle at 14,982. The BSE mid-cap index rose 0.63% while the small-cap index gained 1.23%. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जीएसटी की भरपाई के लिए राज्यों को 5,000 करोड़ रुपए की 17वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी। इसमें से 4,730 करोड़ रुपए 23 राज्यों को और 269 करोड़ रुपए से अधिक की रकम 3 केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है। And in the U.S., stocks traded mixed and in a narrow range. The three major U.S. stocks remained steady as investors rotated out of technology-related companies. The Dow Jones ended flat while the S&P 500 fell 0.2%. The Nasdaq Composite Index added marginally by 0.1%. श्रोताओं की ओर से शरद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। साप्ताहिक आधार पर घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक 1% घाटे के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 51,000 के स्तर से नीचे आया। निफ्टी 15,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसला। That's all we have in this edition of Money Matters. Do join us at 6:30 p.m. on our program Market Mantra, same frequency. Till then, goodbye.